So very good evening to all. आज आम यूनिट डायमेंशन रो लेक्चर 3 रे अच्छु. आज रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची हमरो टू सॉल्व फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स. जो न्यूमेरिकल्स जेमती आमे जानिथिलु जे यूनिट डायमेंशन रे आमे वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करथुलु, बट आज आमे केवल आउ किछि मोर न्यूमेरिकल करबा. बट प्रायर टू स्टार्टिंग करबा आगरु मो या कहूची ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आमे आज क्लास बहुत लेट रे स्टार्ट करछु. So we are very sorry for that one. And please cooperate us for that. Okay, so आम बर्तमान स्टार्ट करबा हमर यूनिट डायमेंशन रो न्यूमेरिकल पोर्शन. फर्स्ट पोर्शन रे आमे आज कवर करबा डिडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फार्मूला. आमे आउ किछि डायमेंशनल फार्मूला बाहर करबा. तो आमे जो प्रथम जिंस आज करबा सेटा होची हमर डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी आमे डायमेंशनल फार्मूला करि सारछे, बट ए डायमेंशनल फार्मूला जो आमे करबा ए डायमेंशनल फार्मूला गुडा होची फ्यू मोर टिके एडवांस वर्जन. एडवांस बोल तो कहबिनी, धीरे धीरे आगु को जानिबा, बट आमे आउ टिके टिके अधिक डायमेंशन विषय करबा. ओके, सो फर्स्ट डायमेंशन जोटा हमर अछि सेटा होची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो हमें डायमेंशनल फार्मूला बाहर करबा. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो फार्मूला कोन ना हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमें जानचो ग्रेविटेशनल फार्मूला होची दैट F is equal to G into m1 m2 whole divided by r square. This is the formula for gravitational force F. But मते बाहर करिवार अछि gravitational constant. So gravitational constant means I have to calculate the dimension of G. तो जेहेतु G रो डायमेंशन मते कैलकुलेट करिवार अछि, तो ए इक्वेशन रु जदि मु G बाहर करे, व्हाट इज माय G? G is equal to F r square divided by m1 and m2. This is the formula. एटा होची मोर फार्मूला G पाई. तो वर्तमान जदि आम डायमेंशन बाहर करबा, सब जगह डायमेंशन पके दबा. F जगह डायमेंशन पड़िबो डायमेंशन ऑफ फोर्स. डायमेंशन ऑफ फोर्स आमे जानचे कोन ना डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t minus 2. तापर अछि r स्क्वायर. r स्क्वायर माने डिस्टेंस रो स्क्वायर. डिस्टेंस रो स्क्वायर divided by 2 times m1 m and into m. जदि ए जिनसटा को हम सॉल्व करबा, इफ वी विल सॉल्व दिस वन, एठी ऊपर जदि सॉल्व करबा, फाइनली इट विल कम एज m रो पावर हबो m into m, एटा m स्क्वायर ऊपर रहि छै हमर m1. सो 1 minus 2 m to the power minus 1. l रो पावर एठी कोन अछि? एठी 1 अछि, एठी आउथरे 2 हेछि, स्क्वायर हेछि. तो टोटल हबो l रो पावर हे जिवो 3 एंड t रो पावर जेमति थिला सेमति t रो पावर हैला -2. सो m - 1 L3 t - 2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आउ थरे टिका ऑब्जर्व करो. एठी गोटे जिंस जेमति मु कहली m रो पावर 1 अछि, तळे दीटा m अछि m स्क्वायर. तो तळे ए स्क्वायर टा ऊपर को उठिबो -2 हे जिवो. सो 1 - 2 दैट गिव्स राइज टू m - 1. l रो पावर 1 एठी 2 मिसी के टोटल 3 एंड t रो पावर -2. सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो हमें कोन पाइलु ना G रो डायमेंशनल फार्मूला और ग्रेविटेशनल फार्मूला होची m - 1 L3 t - 2. तापर हमें जीवा नेक्स्ट गोटे पैरामीटर अछि हमर सरफेस टेंशन. नेक्स्ट हैला सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ए जिनसटा कोन तमे आगो को लिक्विड रे पढिबो, बट आमे एठी खाली डायमेंशन फार्मूला बाहर करछि. सरफेस टेंशन को आमे रिप्रेजेंट करिबा सिग्मा द्वारा. सिग्मा रो फार्मूला होछि फोर्स बाय लेंथ. फोर्स बाय लेंथ. तो फोर्स रो फार्मूला होछि m1 l1 t -2 एंड लेंथ रो फार्मूला होछि l. जदि याको हमें सॉल्व करिबा, इट विल कम एज योर m1
m1 l2 t minus 2. So एटा जदि करिबा हमर l पावर एठी 1 अछि तळे 1 अछि कैंसल हे जिवो l to the power 0 t to the power minus 2. So this is the dimension formula of surface tension or sigma. This is how आमे dimension formula बाहर करछु. Surface tension पर next property जोटा आमे बाहर करिबा सेटा होछि Planck's constant. We call it as Planck's constant. Planck's constant रो formula कौन रे ना Planck's constant को generally h से represent करंती and h is given by energy by frequency. Energy by frequency. Energy by frequency. So energy रो dimension कौन ना energy रो dimension होची m1 l2 t minus 2. This is the dimension of energy. Frequency रो dimension होची 1 by t. So t to the power minus 1. If we solve this ताले हमें कौन पाइबारे m1 l पावर जेमति थिला सेमति रहइबो t टा -1 अछि ऊपर को उठी गले कोन हे जिवो +1 हे जिवो. So it will be t -1. So एटा हला dimension formula of h. So h is equal to m1 l2 t -1. तापर आ गोटे जिंस अछि specific heat. Specific heat. Specific heat रो formula कौन ना heat. Specific heat formula होची heat divided by mass into temperature. ये जो formula. तो heat is also form of energy. तो heat energy को light energy को potential energy को kinetic energy को energy रो dimension is same. That is m1 l2 t minus 1 whole divided by mass रो हला m and temperature रो हला k. जदि हम को सॉल्व करिबा ताले it will be m1 अछि तळे अछि कटि जिवो m to the power 0 l2 t minus 1 k minus 1. So आमे लिखि परिबा हमर जो specific heat अछि specific heat रो dimension हबो m रो power 0 अछि बोली हम लिखु नाही और आमे ताको यदि मेंशन करिबा ताको ओमिट कर देई परिबा it will be l2 t to the power minus 1 k to the power minus 1. This is nothing but your specific heat. तापर next आ गोटे देखिबा Boltzmann constant. Boltzmann's constant. Boltzmann's constant. ताको रिप्रेजेंट करछु हमें कोथरे k रे. तारो फार्मूला होची heat divided by temperature. Heat divided by temperature. So heat रो फार्मूला कोन मु कहितली anything energy. Energy रो फार्मूला हला m1 l2 t minus 2 and temperature हला k और Kelvin रे हमें नोचो. So it will be m1 l2 t minus 2 it हला dimension of k. So these are the few important formula जोटा कि आमे आज reduce करछु and we will do it some more. आउ किछि अधिका भी आमे करिबा जेमते impulse. We have a term called impulse. Impulse कौन ना impulse रो formula हला force into time. Force into time. That is equal to force dimension formula m1 l1 t minus 2 into time hela t. So it will be again m1 l1 t minus 1 m1 l1 t minus 1. It hela tamar impulse ro dimensional formula. Then there is another formula jota ko ame kohuchu kono na moment of inertia.
moment of inertia. तो moment of inertia रो formula होची mass into distance रो square. This is nothing but mass into distance रो square. So mass पाई आमे नबा m, distance पाई l square. So its dimension formula will be m1 l square रो. This is the dimension formula for your moment of inertia. You may or may not, तमे यदि चाहिबो एटा को चेंज करके t equal to 0 बोली भी करि परिबो, because आमे सब बळे रिप्रेजेंट करछु mlt रे. This is also correct one, and m1 l2 both are correct. यदि कोनोसी टर्म एब्सेंट अछि आमे ताको 0 बोली नै परिबा, अदरवाइज आमे कैलकुलेशन करके भी एमते लिखि परिबा. नेक्स्ट होछि वेलोसिटी ग्रेडिएंट. नेक्स्ट टर्म इज velocity gradient. Velocity gradient. Velocity gradient रो formula कौन है ना? It is velocity by distance. The formula is velocity divided by distance. तो velocity by dimension formula है L1 t minus 1 divided by distance होची L. So सब कैंसल हो जीवो, केवल रही जीवो t. So its dimension formula m नाही, m to the power 0, l भी 0 हे गला, t रो पावर रहिला -1. So this is the dimension formula of velocity gradient. This is how your dimension formula is being calculated. तो ए जिनस रे आगु को जीवा पूर्व तुम यदि प्रतिटी एग्जांपल ले देखिबो, गोटे भूल पिलांक द्वारा कौन हुए ना, पिला कहती सर डायमेंशन आमर मने रहू नहीं. यदि तुम डायमेंशन मने रखा को चाहूच ताले तमर सबुठु इंपोर्टेंट काम कौन, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. ए फॉर्मूला मन रखिबो. ए फॉर्मूला रु आमे जदी बेसिक क्वांटिटी मन रखिदबा mlt आम पई सब बळे सब जगह रे देखो मु आगे फॉर्मूला बाहर करछि, तापरे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करछि ईच एंड एवरी जगह रे. फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स रो डायमेंशन तुमको जणा अछि. फोर्स डायमेंशन ता कोन बाहरिबो, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ. यू गॉट द डायमेंशन. सब जगह रे देखो योर दिस इज द वे टू राइट द डायमेंशन. डायमेंशन लिखिबार सबुठु ठीक वे हला तमे आगे फॉर्मूला टा मन रख. से फॉर्मूला रे जो क्वांटिटी इन्वॉल्व, प्रतिटी क्वांटिटी रो डायमेंशन को पुट करके जदि सिंप्लीफाई कर दबो ताहले तुमको डायमेंशन लिखिबार इजी हबो. डायमेंशन केबे तमरो घोषिला वाला जिंस नुहे. तमे जदि जेकोनोसी डायमेंशन घोषिया पई चेष्टा करिवो ताहले तमे सबले कंफ्यूज हेकी रहि जिवो. m1 l1 t1 एमती कंफ्यूज, जेतेबेले जहा पचारले केतेबेले एटा 1 केतेबेले सेटा 2 3 हेउतबो. तो बेस्ट वे इज टू रिमेंबर द फॉर्मूला and know some basic your dimension formula. Basic means mass, acceleration, velocity, displacement, time. तो केतटा बेसिक 10-12टा मने रखिले मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी को तमे इजीली सॉल्व करि परिबो यूजिंग द फॉर्मूला. ता परे आमे डायमेंशन एनालिसिस रो आउ गोटे जिंस यूज करथिले कोन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला. वर्तमान से रिलेटेड आमे किछि न्यूमेरिकल करबा. सेटा हला check the correctness of a given formula. गोटे फॉर्मूला रो चेक आमे चेक करिबा whether that formula is dimensionally correct or not. तो या पई हमर गोटे जिंस यूज होतला कोन, जोटा को आमे कहूतलु प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एटा प्रीवियस क्लास रे भी हम तो कहितली, आज टिके रिमाइंड कर दउची. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोन कहूची ना, इट सेज दैट all the terms involved in a dimensional equation must have the same dimension. और जदि हम एटा को शॉर्टकट रे लिखिबा, all the terms in a given equation have same dimension. All the terms in a given equation have
सेम डायमेंशन एटा होचे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्तमान में या रिगार्डिंग किसी न्यूमेरिकल्स करबा विल डू फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स फर्स्ट वन इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh एटा गोटे रिलेशन मते दिया हेची हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh तो मु यार प्रतिटी टर्म रो डायमेंशन बाहर करिबी जदि डायमेंशन मोर समान बाहरिला देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट तो हाफ mv स्क्वायर रो डायमेंशन बाहरिबा कथा किंतु मोर हाफ mv स्क्वायर रे हाफ रो डायमेंशन केबे बाहरिबो नाही बिकॉज हाफ इज ए कांस्टेंट यार कोनोसी डायमेंशन बाहरिबो नाही सो जदि मु लिखिबी हाफ mv स्क्वायर रो डायमेंशन हाफ रो डायमेंशन बाहरिबो नाही केवल mv स्क्वायर बाहरिबो mv स्क्वायर माने मास इनटू वेलोसिटी रो स्क्वायर L1 t minus 1 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आमे देखिबा कोन ना m1 L2 t minus 2 एटा हला मोर mv स्क्वायर रो डायमेंशन बर्तमान मोर आ गुटे टर्म एथरे कोन इन्वॉल्व अछि ना mgh सो mgh सो बर्तमान mgh रो जदि आमे डायमेंशन बाहर करिबा इट इज m g टा हला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सेलरेशन को समस्तंकर डायमेंशन होची समान सो इट इज L1 t minus 2 h होची डायमेंशन ऑफ L यदि याकू आमे सॉल्व करबा इट इज अगेन m1 L2 t minus 2 तो मु कोन देखिली मोर जो लेफ्ट हैंड साइड रे जोटा अछि LHS रो डायमेंशन is equal to dimension of RHS hence the equation is dimensionally correct प्रतिटी टर्म रे हमें डायमेंशन फार्मूला बाहर करिबा एंड ए भला चेक करी करी जिबा नेक्स्ट फार्मूला जोटा हम चेक करिबा दैट फार्मूला इज fs is equal to half mv square minus half mu square हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर तो प्रतिटी टर्म रो डायमेंशन आमे कढिबा तो fs रो डायमेंशन fs स्टैंड्स फॉर f स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट सो फोर्स रो डायमेंशन L1 m1 L1 t minus 2 into s टा हैला डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू L सो दैट इज इक्वल टू m1 L2 t minus 2 then half mv स्क्वायर रो जदि आमे डायमेंशन बाहर करिबा तो हाफ रो कोनोसी डायमेंशन नाही आमे केवल डायमेंशन बाहर करिबा mv स्क्वायर रो दिस इज m1 L2 t minus 2 दिस इज द डायमेंशन जदि आमे पुनी बाहर करिबा mu स्क्वायर रो आमे u नो किबा v नो दे हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी so that is equal to half mu square so again it will be same as that of the previous one m1 L2 t minus 2 तो जदि एठी मु देखिबी मोर जो लेफ्ट हैंड साइड रे LHS थिरा तार डायमेंशन होची m1 L2 t minus 2 एंड राइट हैंड साइड रे जो टर्म देटा मोर अछि हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर तार डायमेंशन भी समान तो मु कोन पाइली ना मोर LHS रो डायमेंशन is equal to dimension of RHS so the equation is dimensionally correct each and every individual ro ame dimension formula bahar करके check कले next example को जिबा next example is x is equal to x0 plus v0t plus half at square ए जो इक्वेशन मु एमती बड़ बड़ इक्वेशन काहे कि नउची तमे गोटे जिंस बुझी कि रख जे कांसेप्ट इज सेम तमे जदी कांसेप्ट क्लियर अछि इक्वेशन केते बड़ थाउ केते छोट थाउ दैट विल हार्डली मैटर तार कोनोसी मतलब नै तमे केवल प्रिंसिपल को धरि कि चलिबो जे मते प्रतिटी टर्म रो डायमेंशन बाहर करिवर अछि ए जो इक्वेशन रे कोन कोन मसे कहला ना जोटा x0 बोली कहूची x जिंसटा हला मोर एठी डिस्प्लेसमेंट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन x इज डिस्प्लेसमेंट जदि मु v रो कथा कहिबी v is v0
it is your initial velocity. This is initial velocity. A जदि कहबी A हैला acceleration. A stands for acceleration. T stands for time. T stands for time. तो आमको एतिकी डाटा क्वेश्चन रे दिया है आमे वर्तमान इंडिविजुअल टर्म रो डायमेंशन बाहर करिबा. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x जेहेतु डिस्प्लेसमेंट यार डायमेंशन होचे l. यदि x 0 कहबा आमे तो x 0 रो डायमेंशन भी सेम कारण ता इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. तमे इनिशियल को किंबा फाइनल को मु कहिची क्वांटिटी रो डायमेंशन सब बेले समान रहिबो. अगेन इट इज l. तापर डायमेंशन बाहर करबा आमे v0t रो वेलोसिटी रो डायमेंशन हला l1 t - 1 इनटू टाइम हला t. तो अगेन एठी t कैंसल हे जिवो आमे पाइबा केवल l. तापर डायमेंशन बाहर करबा हाफ at स्क्वायर रो. तो हाफ at स्क्वायर तो आमे डायमेंशन बाहर करबा हाफ at स्क्वायर रु हमर डायमेंशन बाहरिबो केवल at स्क्वायर कोन हाफ रो डायमेंशन नाही. दैट इज इक्वल टू l1 t - 2 इनटू t रो स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू कैंसल ले गले अगेन हमें पाइबा l. तो एठी भी हमें फाइंड आउट कले whether the LHS रो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. So that is equal to all have the same dimension, that is L. So the given equation is dimensionally correct. Each and every term it is dimensionally correct. Next equation को हमें जिबा. Next equation is lambda is equal to h by mv. Lambda is equal to h by mv. तो एठी लैम्बडा कौन रे ना लैम्बडा हला वेवलेंथ. लैम्बडा हला वेवलेंथ. h हला प्लैंक्स कांस्टेंट. h हला प्लैंक्स कांस्टेंट. m हला मास एंड v इज वेलोसिटी. जदि आमे से हिसाब रे डायमेंशन फार्मूला पकेबा लैम्बडा वेवलेंथ l माने आरो डायमेंशन हला कोन ना l. लैम्बडा रो डायमेंशन हमें पाई गले l. वर्तमान हमें कोन करिबा ना h रो डायमेंशन डायरेक्ट हमें सब्स्टिट्यूट करिबा. h रो डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करिबा ए प्लैंक्स कांस्टेंट. तो प्लैंक्स कांस्टेंट रो डायमेंशन होची m1 l2 t - 1 डिवाइडेड बाय l. तले अच्छी m इंटू v. तो m हैला कौन ना m हैला दिस इज डायमेंशन ऑफ h बाय mv. प्रथम आम लैम्बडा बाहर करचे m रो हैला मास इंटू वेलोसिटी रो हैला l1 t - 1. जदि आम एको शॉर्ट करबा एथरे m कैंसल हे जिवो t - 1 कैंसल हे जिवो. एठी l2 अछि एठी l1 अछि अगेन आम पाइबा दैट इज इक्वल टू l. तो आम कौन देखले लैम्बडा रो LHS रो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ईच एंड एवरी टर्म को मतलब कैलकुलेट करूचु वी हैव टू शो इट एवरी टाइम. ओके आ गोटे फेमस इक्वेशन अछि हमरो जोटा को आमे कहू आइंस्टाइन्स आमे कहू इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर मास इक्विवेलेंट एनर्जी बोली कहा जाए. गोटे इक्वेशन समस्ते सुनिथिबो E इक्वल टू mc स्क्वायर. E इक्वल टू mc स्क्वायर. तो जदि एठी आमे डायमेंशन बाहर करिबा तो हमको E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. E इज फॉर एनर्जी. m इज इक्वल टू मास एंड c इज इक्वल टू velocity of light. c is equal to velocity of light. बर्तन जदि हमें डायमेंशन पकेबा e रो डायमेंशन हमें पकेबा what is the dimension of e? Dimension of e is given as m1 l2 t - 2. this is the dimension of e. then हमें बाहर करिबा mc स्क्वायर रो डायमेंशन. mc स्क्वायर रो डायमेंशन माने
m into c square. C is nothing but velocity. So L1 t minus 1 raw square, that is equal to m1 L2 t minus 2. एठी भी आमे देखिले कोण ना डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. LHS रो डायमेंशन is equal to right hand side dimension. So the given equation is dimensionally correct. Then out of अच्छी equation आमर कौन, that is t is equal to 2 pi root over of L by G. तो मु तुमको जो इक्वेशन गुड़ा कराऊची से इक्वेशन गुड़ा को टिके टिके लेवल अप कर नौची. प्रथमे प्रथमे एग्जांपल जो गुड़ा थिला फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर रे टिके सिंपल थिला, इठी धीरे धीरे मु कॉम्प्लेक्स आड़ को जाऊची. बट तमे देखो सब जगह रे फाउंडेशन इज रिमेन सेम. तो टी पाई एल जी रे मोर एल कोन रे एटा एक्चुअली मोर कहार एक्सप्रेशन ना, एटा होची एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम वेयर टी इज इक्वल टू टाइम, L is equal to length of the pendulum, and G is equal to acceleration due to gravity. G is equal to acceleration due to gravity. जदि आमे आरो डायमेंशन फॉर्मूला वर्तमान बाहर करिबा, T रो डायमेंशन नॉर्मल रहिबो, इट इज T. वर्तमान L बाई G रो डायमेंशन आमे बाहर करिबा, होल रो पावर होची रूट ओवर रो पावर हला हाफ. सो इट इज अगेन L. G हला acceleration due to gravity, same as that of the acceleration, that is equal to L1 t minus 2 whole रो 1 by 2. So L cancel ही जीवो, t minus 2 रो t minus 2 अच्छी ऊपर को उठेले plus 2 ही जीवो 1 by 2. again आमे पाइलु कोन t. so dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. so the equation is dimensionally correct. so एई भला हिसाब रे आमे देखिलु from the very simple one to the complex one. सबु जगह रे आमे सेम प्रिंसिपल जहा पढिथिलु, किछि किछि अधिका एग्जांपल करी कि आमे धीरे धीरे आगु गलु. बट एठी गोटे जिंस तुमको मु कहि रखुची, मन रखिबो द कांसेप्ट इज सेम. एंड एथिरो किछि क्वेश्चन अछि जोटा कि तमरो एंट्रेंस लेवल रे भी आसे. एंड बट द अगेन द कांसेप्ट लेवल इज सेम. मु सेत में कहे तमे जदि चाहूचो जे तमरो एंट्रेंस रे प्रिपरेशन भल से हो, तो तुमको ए फाउंडेशन गुडा को बुझिबा को पड़िबो. एंट्रेंस रे डिफरेंस कोन थिबो, तमरो सेठी केवल इक्वेशन गुडा टे कॉम्प्लेक्स थिबो, लेंथी थिबो. बट अगेन द प्रिंसिपल कोर वैल्यू इज सेम, सेथरे कोनोसी डिफरेंस आसीबो नाही. आमे सेकंड एप्लीकेशन गोटे पढ़िथिले यार कोन डायमेंशन फार्मूला रो, दैट आमे पढ़िथिले टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर. आर गोटे एप्लीकेशन थिला टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर. गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रु आ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करिबा, एटा गोटे एप्लीकेशन थिला. तो वर्तमान आमे तार भी एग्जांपल के करिबा, सो दैट इट विल बी कवर्ड होल द थिंग. तमर सब जिंस को से कवर करिवो. तुमको क्वेश्चन दिया हेची वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जस्ट टिके आगु मु तुमको करैथिली कैपिटल G. सो कैपिटल G रो तमर जदि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो वैल्यू देइची से CGS रे एंड कैलकुलेट कहिची तार SI वैल्यू बाहर करो. तो G रो तमर CGS रो वैल्यू से देइची, दिस इज गिवन एज 6.67 into 10 to the power -8 dyne सेंटीमीटर स्क्वायर G -2. एटा देइची तुमको कोथरे ना CGS रे. फाइंड G वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ G
in SI system. In SI system. तो प्रथम आम कौन करवा ना आम प्रथम कम सब बेले मुझे आम तीन टा जिनस दरकार गोटे सिस्टम 1 गोटे सिस्टम 2 आउ जो जिनसर आम कन्वर्ट करवा यूनिट तार डायमेंशन फॉर्मूला। तो प्रथम मत ये बाहर करा पड़ो डायमेंशन फॉर्मूला। आम जानचु कौन F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 divided by R square. So here we calculate G is equal to FR square divided by M1 M2. So the dimension पकेबा M1 L1 T minus 2, this is the dimension of F, and L square, this is the dimension of L, whole divided by M1 M2, that is equal to M into M. हम यदि आपको सॉल्व करवा फाइनली वी गेट इट एज m to the power minus 1 L to the power 3 and T to the power minus 2. ये जिनसटा हमको दरकार थिला डायमेंशन ऑफ G। तो वर्तमान आम कौन करवा ना आपको सॉल्व करवा आम कौन पाइलु डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G रो डायमेंशन फॉर्मूला आम पाइगलु इट इज गिवन एज m minus 1 L3 T minus 2. ओके तो ये जेहेतु डायमेंशन ने भी मोर इंडिविजुअल क्वांटिटी नवा पड़ो मत कौन कौन ना हियर आई टेक A इज इक्वल टू -1 B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू -2. ओके तो सिस्टम 1 दिस इज सिस्टम 1 जोटा कि अच्छी मोर कौथरे ना CGS रे एपटे हूँ मोर सिस्टम 2 जोटा हूँ मु जीवी को सिस्टम को MKS को। तो हियर M1 इज इक्वल टू CGS पाई 1 ग्राम L1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर T1 is equal to 1 second and N1 is given as 6.67 into 10 to the power minus 8 एटा देइछि। तो MKS सिस्टम रे जदि मु कैलकुलेट करिबी M2 is equal to 1 kg L2 is equal to 1 meter T2 is equal to say 1 second and मते N2 रो वैल्यू कैलकुलेट करिवार अछि। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2 सब बेले एई भले प्रोसेस रे लिखिबो। मु एठी डिटेल्स करेबार माने हला यू मस्ट नो द प्रोसीजर हाउ टू राइट आमे केमती लिखुछु। तो वर्तमान जदि देखिबा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन सिस्टम 1 फिजिकल क्वांटिटी represented in system 1 it is nothing but N1 into M1 to the power A L1 to the power B T1 to the power C. Physical quantity represented in system 2 physical quantity represented in system 2 that is equal to N2 into M to the power A L to the power B T2 to the power C. सो जेहेतु दीटा सारा फिजिकल क्वांटिटी सेम कारण मु कहि जदि CGS रे मु कहूची सेटा हला ग्राम MKS रे कहबी केजी तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो जेहेतु दीटा सारा फिजिकल क्वांटिटी रो वैल्यू समान आमे दीटा सारा को इक्वेट कर दबा। तो इक्वेट कर देले कोन पाइबा N1 M1 to the power A L1 to the power B T1 to the power C that is equal to N2 into
m2 to the power a, L2 to the power b, T2 to the power c. तो मते एक्चुअली फाइंड आउट करियार अछि वैल्यू ऑफ n2. So my n2 will be n1 into m1 by m2 whole to the power a, L1 by L2 whole to the power b, T1 by T2 whole to the power c. आमे सब्स्टिट्यूट करिबा वैल्यू ऑफ n1 मते देछि 6.67 into 10 to the power minus 8. m1 जदि आमे देखिबा this is equal to 1 gram, m2 टा हला 1 kg, इटा हला 1 सेंटीमीटर, इटा होची 1 मीटर. ए रो वैल्यू ए बी सी रो वैल्यू केमती आमे एठो ऑलरेडी कैलकुलेट करछे. ए बी सी, ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -2. सो ए रो वैल्यू हला -1 एंड बी रो वैल्यू होची 3 एंड सी रो वैल्यू both are second, 1 second by 1 second whole to the power -2. Clearly देखो 1 3 -1 3 -2. So -1 3 -2 मैं सब्स्टिट्यूट कर देली. तो याको टिके सॉल्व करिबा 6.67 10 to the power -8 1 ग्राम. आ जदि केजी टाकू मु लिखिबी इट इज 10 to the power 3 whole to the power -1 1 cm. So that is equal to 1 divided by centimeter color 10 to the power 2 whole to the power 3. So इटा है जीवो मोरो 1 second कटि गले 1. So this is 6.67 10 to the power -8. 10 to the power 3 टा तळे पॉजिटिव हे कछि ऊपर उठी गले इट नेगेटिव हे जीवो. So it will be solved as your 10 to the power -3. एठी 10 to the power 2 अछि 3 अछि तो 10 to the power 6 ऊपर उठी गले हे जीवो 10 to the power 6. यदि आकु आमे सॉल्व करबा अगेन 6.67 सब तक 10 रो पावर को सॉल्व कले 6 रु 3 गले एटा रहइबो कोन -8 अछि. अगेन हमर एठी कोन हे जीवो एटा माइनस हे जीवो ऊपर -6. सो दिस इज इक्वल टू टोटल जदि आमे आकु सॉल्व करके लिखिबा it will be come as your 10 to the power -11. Solve कले 6.67 into 10 to the power -11. This is the value of n2 you have to come ultimately. Finally तुम्हारे ये value टा तुम्हें express रे पाइबो. So this is how we calculate value of n2. जेमती हमें convert करचे हमें तो convert करचे. So this is the one example जोटा हमें cover up कले आज total. एंड आ गोटे एग्जांपल आमे करिबा टू डिराइव ए रिलेशन. जदि डिराइव ए रिलेशन रे आमे करिके देखिबा हाउ इट विल कम. टू डिराइव ए रिलेशन तो एठी क्वेश्चन देछि कोन ना आमे कैलकुलेट करिबा वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव. से कहला वेलोसिटी ऑफ water wave which is v hela which is v depends upon wavelength which is lambda, density of water rho, density of water rho and acceleration due to gravity g.
and acceleration due to gravity g. So find out a relation between v and the other quantities. तो मते relation बाहर करियार अछि, find relation between v and other quantities. ओके, तो मु जानी नहीं को क्वांटिटी संगे तुम को क्वांटिटी केमते रिलेशन, तो मु सब गुडा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखुची कारण लिखि देला डिपेंड करे. सो वी कैन राइट इट एज v directly proportional to lambda to the power a rho to the power b and g to the power c. This is equation 1. यदि proportionality constant को मु हटाई देबी, equation 1 एटा न देबी, proportionality constant को हटाई देले v is equal to गोटे constant गुणा जीवो k into lambda to the power a rho to the power b g to the power c. Now we have to substitute the dimension of each and every term. जदि मु dimension बाहर करिबी v रो dimension हला L1 t minus 1. जदि मु wavelength रो dimension बाहर करिबी lambda रो, it is simply L. जदि रो density रो मु dimension बाहर करिबी, if I calculate the dimension of density, this is equal to mass by volume m1 L to the power minus 3. जदि मु g रो बाहर करिबी dimension, this is acceleration, g is equal to L1 t minus 2. बर्तमान जो डायमेंशन गुड़ा मुझे बाहर कली देख, जमी मुझे ऑलरेडी v रो डायमेंशन बाहर करछि, लैम्बडा रो डायमेंशन बाहर कली, रो रो डायमेंशन बाहर कली, g रो डायमेंशन आमे सब्स्टिट्यूट कर दबा इक्वेशन 1 रे. दिस इज माय इक्वेशन 1. सो दिस इज L1 t minus 1. एंड को नेक्स्ट पेज रे करबा, इट विल बी इजियर. नेक्स्ट पेज रे हम को सॉल्व करूचे. L1 t minus 1 एटा हला हमर v रो डायमेंशन, दैट इज इक्वल टू k रो कोनोसी डायमेंशन नाही, वेवलेंथ रो डायमेंशन हला लैम्बडा टू द पावर a, एंड जदि आमे डेंसिटी रो बाहर करिबा m l टू द पावर minus 3 होल टू द पावर b. जदि आमे g बाहर करिबा L1 t minus 2 होल टू द पावर c. ताले वर्तमान हमको सब बेले मु कहिछि आमे एते कंपैरिजन करबा, हमको इक्वेशन नो फॉर्मेट दरकार m l t फॉर्मेट रे. सो एठी m नाही, सेत पई m0 L1 t minus 1, एठी इक्वेशन रे m0 L1 t0 होल टू द पावर a, एठी m रो पावर b, केवल पावर टा मु भितरे गुणी दउची, m रो पावर b L power minus 3b, एठी L power c गुण देवी c t to the power minus 2c. So this is the current equation. जदि एटा को मु अगेन सिंप्लीफाई करके लिखिबी m to the power 0 L to the power 1 t to the power minus 1. m रो पावर एठी केवल b अछि, आउ किछि नै, m to the power b. L पावर एठी केवल a आसीबो, L to the power a, एठी अछि माइनस 3b, एठी अछि c, सो प्लस c. देन आमे बाहर करबा t रो पावर एठी अछि 0 हे जिवो, t रो पावर अछि केवल माइनस 2c. कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, comparing both sides of the equation, हमें कौन पाइचे ना m रो पावर 0 b रो पावर 0, so b is equal to 0. this is equation 2. आ गोटे इक्वेशन कौन पाइले l पावर 1, l पावर होचे एपटे a minus 3b plus c is equal to 1.
This is equation 3. आउ गोटे इक्वेशन कौन पाइले एटा -1t अच्छी एपटे -2c अच्छी सो -2c इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1/2. दिस इज इक्वेशन 4. जदि 2 3 4 को आम सॉल्व करबा आम कौन पाइचे ना b रो वैल्यू पाइले 0 c रो वैल्यू पाइले हाफ जदि b आउ c रो वैल्यू मु इक्वेशन 3 रे पुट करबी फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 रे मु कौन पाइबी b आउ c को जदि मु पुट कर देबी मु a रो वैल्यू पाई जीबी 1/2. बर्तमान ऑल द अननोन कांस्टेंट जोटा मोर थिला a b c सब गुडा ऑलरेडी मु कैलकुलेट कर देछि दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हाफ b इज इक्वल टू 0 and c is equal to half. Bartaman putting the value of a b c in equation 1 from equation 1 आम देखा इक्वेशन 1 कोटा ये देख v इज इक्वल टू अच्छी आम सब जगह वैल्यू पके दबा सो दिस इज v इज इक्वल टू k इंटू लैम्बडा टू द पावर a माने लैम्बडा रो हाफ एंड तापरे कही रो रो b रो रो है आमर रो 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 b रो वैल्यू है 0 देन अच्छी c कहूँ कौन ना c इज नथिंग बट g टू द पावर अगेन हाफ तो जेहेतु रो रो पावर 0 अच्छी तो रो रो पावर सांगे मोर किसी मतलब नहीं v इज इक्वल टू आम लिखिपर k इंटू लैम्बडा इंटू g होल रो रूट ओवर. So this is the relation v in relation to the other physical quantities. So आमे all the parameter जहाँ जहाँ unit dimension रो numericals आमे करिथिले सबो numerical each and every type रो आमे cover करिछु. So on the very next class we'll move on to a new chapter which is called scalar and vector. Thank you for today. Keep watching for the next video, that is new chapter will be started, that is scalar and vector.